please remain with us and enjoy the informations which will be given by our Thank you very person. much, sir. We would like to welcome you all on Independent Research Ethics Society's AYUSH Samriddhi International Webinar Series, and the subject is Traditional Vaccination. Today we are celebrating World Zoonoses Day. So our guides, with Parul Joshi ji, Dr. Narendra Sharma ji, Professor Shumay Das will guide us on the system of traditional vaccination for immunity or for other diseases at historical era. So thank you very much for joining. I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji to welcome the speakers. Namaskar. Namaskar. Good evening to everybody. Hari Om. Respected distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. I, Professor Dr. Vishnu Prasad Sharma, welcome all of you to this AYUSH Samriddhi International Webinar Series on traditional vaccination. Most important subject today we have. In this webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Boddo Parule Joshi from Gandhinagar. Namaskar, madam, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar on traditional vaccination. Next, I want to welcome Dr. Narendra Dev Sharma from Lucknow. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi webinar. Next, I want to welcome Professor Shubhamoy Das, Associate Professor, Department of Zoology from East Medinapur. Namaskar, sir, and welcome you to this AYUSH Samriddhi International webinar series. Once again, I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this important AYUSH Samriddhi International webinar series on traditional vaccination. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Thank you very much, sir. So nice of you. Thank you very much. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for brief preamble. Thank you, Professor. आ चुके हैं, हमारे सोमय दास जी आ चुके हैं, पारुल जी ज्वाइन हुई थी, अभी फिर ज्वाइन हो रही. Please. So, without wasting any moment, thank you, Professor Sharma ji. It's a great pleasure to have a very new topic on Zoonosis Day, that traditional vaccination, if at all it is possible, for the immunization also. So it's a very new subject, and it is very new for us all, and how it is made practical for the greater benefit of the suffering humankind or mankind, or to protect, or to prevent, or to increase the body immunity with the help of the Ayurvedic sources. So it's a very, very new topic, and we are all eager enough to listen the newer information from our expert guest speakers. So with these words, we welcome our guest speakers, Professor Madam Parul Joshi, our very respected senior Dr. Narendra Sharma ji from Lucknow, and also Professor Shumay Das, guest speakers. Definitely, they are going to make good exercise for the topic, and we will be going to learn a lot. With these words, we again welcome and also hand over the communication to Professor Pawan Sharma ji for the invitation of the guests. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much. I hope Parul ji is about to join. Dr. Parul Joshi ji, have you joined? I would like to request Dr. Shubhamay Das ji for his valuable speech. Dr. Shubhamay Das from East Medinipur. Welcome, Professor Dr. Shubhamay Das. Welcome. Hello, am I audible? Yes, clear, loud and clear. Welcome. Sir, welcome. Yeah. Thank you, Akhil. Very good evening. I am Professor Shubhamoy Das from Mahishadal Raj College, West Bengal, Purba Medinipur.
Hello, is it visible? Hello. Yes, clear. Your slides are visible and you are clearly audible. Okay, sir. Actually, today's topic is traditional vaccinations. But as today is the International Zoonosis Day, so at first I want to say something about what is zoonosis and then little bit about traditional vaccinations. Actually, what is zoonosis? So in this picture, it's very clear that the father, mother, and the baby, but it surrounds a series of animals. It animals from the birds, pigs, horse, cow, cattle, dogs, crabs, mosquitoes, lizards, cats, parrots, pigs, hares, rabbits, and the flies. So all of the surrounding organisms are the animals. The word zoonosis. So is the process of transmission of diseases from animal to human beings. So disease and infections which are naturally transmitted between vertebrate animals and to human beings. And that's called zoonosis. Two words, zoo means animal and the notions with the disease. And this figure, Rudolf Virchow, the person who for the first time told that omnicellula is cellular. That means every living cells originates from pre-existing cells. That fellow plays important role in the cell biology and the modification of the cell theory. And that guy, Rudolf Virchow, coined the term zoonosis. Now, all the zoonotic diseases, either the bacteria, the fungi, the parasites, and the viruses. Zoonotic diseases, very interesting that in the modern era, near about 61% of all human diseases are zoonotic in origins. And 75% of new diseases discovered last decades also zoonotic. So, in terms of vaccinations, the word vaccinations comes from the word vacca. The word vacca means cow. There are many generation vaccinations, the old generation vaccinations, first generation, second generation, third generation, fourth generation, and the modern generation vaccination, the recombinant DNA technology, and the RNA vaccine, DNA vaccine. And we observed all this in the COVID period. Now, at first, little bit introductions about the zoonosis, that there are different types of zoonotic diseases are there, which can be transmitted from animals to human beings. After the viral zoonosis, rabies, influenza, the bacterial zoonosis, fungal zoonosis, and the parasitic zoonosis. So many zoonotic diseases are there. So among these zoonotic diseases, so many vaccines are there. The few traditional vaccination processes are there, and few modern vaccinations are there. Sure. Okay. Now the mode of transmissions, it may be direct zoonosis. The direct zoonosis is very important. When suppose one dog bite you, the virus transmitted from dog's body to the human beings. That's called direct zoonosis. Now, cyclozoonosis. Cyclozoonosis means one vertebrate host must be there. Suppose a pig or a cow. From pig to cow, how it can transmit into human beings. Suppose in case of teniasis, cyclozoonosis. Metagenosis is very, very important. Very, very important. One invertebrate host must be there. Suppose leishmaniasis. In case of leishmaniasis, in case of plague, in case of arbovirus. So suppose a fly and invertebrates also involved in this transmission of the diseases. And finally, saprogenosis. Saprogenosis is also very important because inanimate objects, suppose soil, water, parts of the plants, also involved in the transmission of the diseases. Now, these are the
different transmission of zoonotic diseases, and our baby, our human beings were very little age, it can easily transmit it by their pet animals. How it can be prevented and how vaccinations helps us. And the different causes of zoonotic diseases, few bacteria, in the fungi, the virus, and the parasites also involved for zoonotic diseases. In case of viral, yes, very important. Yeah, the rabies virus. In case of rabies virus, so when a dog bites us, the virus, like the virus, at first comes into our blood, and blood to our nerve, and through the nerve, it goes to nervous systems and the brain. And this is the mode of transmissions. So in India, dogs are the main vectors and responsible for 95% of the total this cases. According to WHO, 50,000 human death occurs every year, and 60% of these are reported only and only from India. Now, so these are the symptoms of rabies virus, and how we can diagnose it, and what the clinical features and the treatments are there. So prevention. So keep your pet away from stray dogs, and the vaccination is only vaccinations to your pets and vaccinations to the human beings. So maintain the distance with the wild animals, prevent bats from the living places. So it doesn't mean that only dog bites is responsible for the rabies virus. If fox, if any rat, even in the bat can bite easily, the rabies virus can transmit it from that animals to the human beings. So wildlife rabies control programs, including the vaccinations, either trap or vaccinate or release or delivery for the oral vaccine. Yeah, recently oral vaccines are very important to prevent this rabies virus. Okay. Now, Kindly continue. Your voice is clear and your slides are visible. Prevention. Hello, Shobhamai ji. yes. So now the bacterial zoonosis. Bacterial zoonosis is very important, especially the disease, Yams diseases, the Lyme's diseases that transmitted through the bite of the ticks, and the infected with the bacterial called the Borrelia. This bacterial diseases in the very recent diseases. For the first time in 1981, this disease. So the Lyme diseases. The main basic culprit is not no one but the tick. The Lyme disease is transmitted to the bite of the tick and infected with the bacterium called Borrelia. This is the Borrelia bacteria. For the 1991, for the first time, this was discovered, and ticks gets the bacterium by biting to infected animals. So if any animals are infected by the ticks, and from that animals through the ticks, human beings can also, but still no vaccinations are there in this zoonotic diseases. Download the app to shop now. Now, so these are symptoms, and these are very important modern days diseases. Lyme diseases in 1981, these are newly discovered. So now another is very much important, the toxoplasma. The toxoplasma caused by Toxoplasma gondii. 1908, it was discovered, and this is spread through the sheep, goat, cattle, pigs, etc. And very much important, the cats are the most common. Through the cat, we can toxoplasmosis in every house. So cat is the common pet animals,
through the common pet animal cat, so the fecal matter of the cat, this toxoplasmosis is very much common in every family. The symptoms is nothing, the swollen lymph node, blurred visions, and the problem in the lungs also occurs, and the just like a tuberculosis, the causing so many, especially the aberrations. In most cases, aberration is the symptom of this toxoplasmosis. So these are the parasites, and this toxoplasmosis. What are the three modes are there? The transmissions, the fecal to oral, fecal matter through the oral, eating contaminated food, and the transplacental transmissions. So this parasite can all be produced oocytes when either infecting a cat. So cat is the main culprit. So toxoplasmosis. So there is no such traditional vaccinations. Now, these are the symptoms and the diagnostic, and these are the preventions. So we have to wear gloves when handling soils, wash hands with soap and water after outdoor activities, wash cutting boards of skins, knives, and other utensils that touched of the raw meat. Keep cats indoor and feed them dry or canned food, rather than allowing them to have access to the wild birds or rodent. If we access the wild birds and rodent to the wild birds and rodent, that toxoplasmosis bacteria can transmit the human beings. And finally, clean the litter box every day. So cleanliness is the main pathway to prevent this diseases. Now, another the fungal zoonosis. So, in the fungal zoonosis, this histoplasmosis, another very important disease is caused by histoplasma, and that another name is called drilling diseases. So nowadays, very significant disease, and these are symptoms of this diseases, and so many difficulties are there. So these are difficulties are acute pulmonary symptoms are there, and chronic pulmonary symptoms are there. So the symptoms of both acute and chronic very much distinct and different. Now, so what are the recent days emerging zoonotic diseases and have no such vaccinations are there, and they are the hantavirus in USA, avian influenza, bovine spongiform encephalitis, and especially the Nipah viruses. So now, what are the factors which are responsible for the spreading of these zoonotic diseases? And this is nothing but the ecological changes, ecological factors changes day by day, and then basically the environmental and agricultural, these operational techniques, basically responsible for the spreading of the zoonotic diseases, especially the increased movement or the especially traveling of the man. So amoebiasis, giardiasis, salmonellosis, SARS, yellow fevers, these types of zoonotic diseases are spreads. So handling animals byproducts as the waste materials, and as a result, anthrax, these types of diseases are spreads. So increase in the density of the animal populations, especially the cultivated animals, is responsible for the spreading of these zoonotic diseases. That today is the international zoonotic diseases. So the drug resistance organisms such as the E. coli and the Staphylococcus, and especially the changing livestock farming practices, changing environmental conditions, including the climate and diseases such as the plagues and the leptosporosis also spreads day by day. So the pathogen changes like genetic shift and the drift, like influenza and the Staphylococcus spreads. So now, we can classify this zoonotic diseases according to etiological agents: the bacterial zoonosis, viral zoonosis, rickettsial zoonosis, protozoal zoonosis, helminthic zoonosis, fungal zoonosis, and ectoparasite, just I already discussed. But according to another classification, the direct zoonosis, cyclozoonosis, metazoonosis, and sporogenesis, I already discussed. But
Another important classification of zoonotic diseases and their anthropozoonosis. Only humans are infected. The rabies, plagues, arrowvirus, zooanthropozoonosis. Animals to human beings, and amphizoonoses. The infection maintains in both human beings and lower vertebrates animals and transmitted in either directions, both the directions. These are most important. Now, rabies I already discussed. So, pathogenesis, symptoms, and these are the now how we can detect how we can detect the diseases. Now, yes. Now the very important, the plague or traditional zoonotic diseases. Very long past plague plays an important role as the zoonotic diseases. So they are deadly infectious diseases that can be caused by enterobacteria, Yersinia pestis, and very important role of a rat transmitted by black rat, Rattus rattus, and oriental rat flea. So these two important animals are responsible for this plague diseases. So transmissions by droplet contact, direct physical contact, or by soil contaminations, airborne contaminations, fecal oral transmissions, and these are responsible for plague. Sure, symptoms and the complications are very common, and these are the cases how we can diagnose and preventions. Prevention is nothing but the rodent population controls. If only and only we can control the rodent or rat populations, only then we can control the plague. So treatment is very simple. The traditional treatments and no such traditional vaccines are there. But now leptospirosis, another important, also caused by rodents, the rats are also responsible. So leptospirosis, diagnosis and the treatment, basically so many drugs are there. Now rickettsial, another important diseases are there. Mortality rate very high. It transmits through the bite of infected local mites. Again culprits the mite. So mites are very important. So this diseases, say rickettsial infections. Now, yes, arboviral diseases, another zoonotic diseases, arboviral diseases through the birds and the rats also responsible. So in India, Japanese elk encephalitis and the dengue virus and the chikungunya virus, these three are the basically under the arboviral diseases. So we all are very much accustomed the dengue virus, chikungunya virus, and encephalitis virus. These three are also zoonotic diseases. So in India, nearly 1/3 of all dengue cases are reported globally. Now, dengue fever, so very well known to us. So transmission through the Aedes aegypti. So we can easily diagnose by very simplest process. Now, the treatment and the preventions, that the vaccines, the single dose for the mass vaccinations campaigns, and also for 2 dose scheduled for during routine immunizations. So recently vaccinations of this dengue also very popular. Now chikungunya virus, that also caused by the chikungunya virus, but the transmitted by the Aedes aegypti. Diagnosis, treatment, the symptomatic treatment, no such any other treatment of chikungunya, and the prevention of the mosquito is the best way to control this. Now, leishmaniasis, another important zoonotic diseases are the leishmaniasis, and the leishmaniasis is caused by leishmaniasis. This disease caused by and the symptoms that called the Kalajor, Leishmania donovani, Leishmania tropica, and the Leishmania braziliensis. These three are the very important species for the causal agent of the leishmaniasis. So Kalajor. So for long time, the leishmaniasis and the malaria are the same diseases.
But this Leishmania donovani, Leishmania tropica, and Leishmania brasiliensis, these three different species responsible for different types of Kala Ajar. But scientist Upendranath Brahmachari discovered the urea stivamine against this Kala Ajar. Diagnosis and the blood sampling and the visceral leishmaniasis, how we can test. Now, another important teniasis and cysticercosis, another important zoonotic diseases. Today is the International Zoonotic Days. So Tinea solium and Tinea saginata. Tinea solium is the host is a cow and a pig. Cow and pig, these two vertebrate animals are responsible for, these two animals are responsible for the host of this teniasis. But another important is the cysticercosis. Cysticercosis is very, very much serious diseases when this germs of Tinea solium or Tinea saginata, its cysticercus stage directly infect the brain. In that case, the condition of the patient become very serious. So only solution is nothing but the surgery. And Tinea saginata, Tinea solium, and the toxoplasmosis also I discussed. Now, the symptoms of toxoplasmosis and anthrax. Anthrax also very important zoonotic diseases, so caused by Bacillus anthrax, and oldest recorded disease of animals. Human acquired these infections by the cattle, sheep, goats, horse, and swine. So anthrax in Mysore 1999, Odisha 2005, and West Bengal 2000, outbreak of this anthrax again occurs. Now cutaneous anthrax, pulmonary anthrax, and intestinal anthrax are very common. Now we can easily diagnose, and but if we consider the top 10 global diseases which caused the death in 2016, we observed that most important disease is nothing but the heart diseases, ischemic heart diseases, and followed by stroke and others. But this zoonotic diseases also plays an important role. But why? Why this zoonotic diseases in makes an outbreak? After World War II, the discovery of the vaccine, antibiotic, and proper hygienic conditions, we can fight a little bit. In 1980s, again, and that zoonotic disease is very important. The AIDS. AIDS appears in India and the world only in 1980s. AIDS appears, and recent zoonotic diseases of modern days. Near about 75% of the modern emerging diseases of the human beings comes from the animals. Now, this is the scenario, very interesting scenario. So here, in 1900 to 2020, from Spanish flu to AIDS to Zika virus to SARS-CoV-2, these are the zoonotic diseases, and against zoonotic diseases, so vaccinations is the most of the cases is the only way. But the traditional vaccinations only not applicable in the COVID. We observe that in the COVID, either protein vaccines or the RNA vaccines. RNA vaccines, is there any side effect? So we are not sure that what the side effect of this RNA vaccines or protein vaccines. So these are the scenario of India, the zoonotic diseases, the very alarming conditions in India when you observe the condition of the total earth. But the condition of the India regarding zoonotic diseases is very much, very, very serious. Especially we living in the tropical forest regions. The tropical forest region, the biodiversity is very high. The population of the rat and the population of the rabbit, population of the bat, and which are basic culprit of this zoonotic diseases. Now, how we can fight against this? Now, these are the zoonotic diseases. These animals are responsible. The vectors and the virus and the bacteria and the fungi are zoonotic diseases. Now, very interesting. The high biodiversity is responsible for, again I repeat, high biodiversity
also responsible for the higher zoonotic diseases. If the amphibia, reptilia, aves, and the mammalia diversity is high, then the diversity of the host is high, and then the diversity of the pathogen, diversity of the virus and the bacteria also high. So now, source of animal-human contact, the domestications and the livestock, biodiversity and the land use patterns, the wildlife consumptions and trade also very important factor increasing of the zoonotic disease, and which in recent eras converts into pandemic. Now, very interesting. 10,000 years ago, the number of human beings was 1%, but the 99% was the wild animal. But today, this graph is very important. That today, the population, the mass of human beings is near about 32%, and the mass of wild animal is only 1%. But our livestock is 67%. As we gradually increase our livestock, the zoonotic diseases increases day by day. So, population matters. Significantly matter. The population of livestock increases, population of human beings increases, but the population of the wild animals decreases. Now, global trades of live animals through the world, the trading of the live animals increases. As the live animal increases, the spreading of the zoonotic diseases, especially their vectors and their reservoirs increases. So zoonotic diseases increases day by day. Now, high biodiversity, but recently threats of biodiversity do occur. As the threats of biodiversity occur, Slide fast. Time. okay, threats of biodiversity, gradually the populations decreases. As the population decreases, all the pathogens changes their selection of the reservoir. Now, this is the system of prey-predation relationship also changes. So the dilutions effect is robust across the biodiversity gradient involving the biodiversity loss. Now, follow here. The loss of changing landscape pattern, especially in West Bengal. You can't see the population of the palm tree. The palm tree was actually the habitat of— Hello. But as gradually the palm tree, we cut down the palm tree, the bat population shifted from palm tree to another plants. So there's another important cause. So bushmeat consumptions and the wet markets, and the other very important cause of spreading of zoonotic diseases. Now, illegal trades and the legal trades. As the illegal trades increases, so zoonotic diseases spreads. So human factors very important, crowding, pathogenic factor also important, and finally the environmental factors, poor healthcare. So now, concluding remarks, 75% of the emerging infectious diseases in humans are from animal origins. But the human pressure on the environmental infest and the exposure to wildlife to human beings. And finally, the spread of disease is accelerated through the globalizers. Now, what we can do? Early warnings and actions, operations. So these are the limit of wildlife. So market, trade, and the bushmeat use, and the balance between prohibitions, regulations, and the support. Human disturbance of the habitat of the wild animals. It can reduce the human footprint and need of integrated approach to health and ecological crisis. Sure. In the zoonotic day, international world zoonotic days, so my appeal is so try to fight with the zoonotic diseases and try to understand what's the life cycles of the animals, parasites, pathogens, and
try to maintain the environmental conditions. So please try to maintain the environment. So if we gradually very close to nature, and जी if we cut down the forest, then the forest animal शुभ enters into our जी locality. So in the zoonotic day, so I present this presentations. Thank you. excellent presentation, Dr. Shobhmoy Das ji. Please do join every day in our scientific gathering. Definitely, you have presented all the aspect of zoonotic diseases and their vaccines. Really great. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. So now I would like to request our beloved Professor Vaidya Parul Joshi ji for his Ayurvedic aspect of traditional vaccination. नमस्कार सर जी। नमस्कार। 10:30 बजने आए हैं तो कितना Sorry, टाइम है मेरे sorry. पास? आधा घंटा है आराम से। नहीं सर, एक्चुअली इतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगी। मैं क्या घर में कहूँ, गेस्ट है, आपको घर में टाइम की गेस्ट रोक है। नहीं। अच्छा ठीक ठीक है ठीक है। हाँ, वेलकम। 1.5 घंटे लेट चल रहे हैं, इट्स टू मच। जी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। जूनोटिक डिजीज एक बढ़िया टॉपिक है और बहुत अच्छा बोले गुप्ता, बहुत बढ़िया बोले और मैं इनको अभिनंदन देती हूँ इनके वक्तव्य के लिए। ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन मेरा कुछ अलग ही इसमें बोलना है कि कहने जो है वे बहुत बढ़िया काम करते हैं और भारत देश जो है वो समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए इसमें मैंने गहनों को ज्यादा महत्व दिया है। ज़ूनोटिक डिजीज के काफी सारे वेक्टर्स है, काफी सारे कैरियर्स है और हम भी वेक्टर भी है, कैरियर भी है, इन्फेक्टेंट भी है और इन्फेक्टेड भी है। तो अगर हमको सब साथ में रहना है तो इन सबको समझ के रहना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद मानता है कि आयुषो वेदः, कैसे स्वस्थ जिया जाए और किस तरह हम अपने स्वास्थ्य का रक्षण करें, समाज के स्वास्थ्य का भी रक्षण करें और भविष्य की पीढ़ियां जो है उनमें भी स्वास्थ्य बना रहे, टिका रहे, ये हमारा कंसेप्ट है। तो zoonotic diseases are diseases or infections that can be transmitted naturally from vertebrate animals to humans or from humans to vertebrate animals. अब ये जो रिसर्च चल रहे हैं उसमें ह्यूमंस से एनिमल्स में डिजीज गए हैं कि नहीं, इसके ऊपर तो काम स्वाभाविक है कि नहीं होगा, क्योंकि हम तो सभी को बदनाम करने में सीखे हैं, सबको साथ लेने में सीखे नहीं है। तो इसके ऊपर काम कम हो रहा है। तो आशा रखती हूँ कि अगली बार जो है नई पीढ़ी जो है वो ह्यूमन से एनिमल्स में कोई डिजीज जाता है कि नहीं, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखे। तो ईच ईयर 2.5 बिलियन केसेस ऑफ इलनेस and 2.7 million human deaths globally, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। Massive under report affects poor and marginalized communities, pose no potential for global spread, significant human morbidity and mortality, imposes a dual burden on humans and animals. It's an ancient disease. Exactly. इट इज एन एंशिएंट डिजीज, ये नए डिजीज नहीं है। हमें पता चला कि ऐसे सिम्टम्स होते हैं, वो शायद है कि पशु से या पक्षी से हम में आते हैं। एंशिएंट डिजीज है, ऑफन एलिमिनेटेड इन वेल्दी कंट्रीज। ये हमारा भ्रम है और हम इसको पालते रहेंगे। कंट्रोल एट सोर्स व्हेन फिजिबल इज हाई कॉस्ट इफेक्टिव, और हम यहाँ देखेंगे कि ऐसा कुछ है नहीं। नेग्लेक्टेड जोनोसिस में ऐसा हो सकता है। ये सार्स कोविड-2 उसका उन्होंने उदाहरण दिखाया, लेकिन देखिए आप ह्यूमन से इनमें जाता है कि नहीं जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन मार्क है।
और बैठ के पीछे हमें जाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि बैठ के जो एक्सट्रैक्ट्स है उससे हमारा आयुष्य बढ़ता है, ऐसे भ्रम में हम लोग रहे हैं। इसलिए बैट्स को पकड़ के उनमें से एक्सट्रैक्ट निकालना है और मनुष्य को ज्यादा जिलाना है। मैं अपने स्टूडेंट्स को हर बार बोलती हूँ कि 2 महीने एक ही प्राणी जो है पिंजरे में रहा और पूरी प्रकृति जो है निखर गई, तो उस प्राणी को कंट्रोल करने की जरूरत है, बाकी सब तो अपने आप प्रकृति कर लेगी। तो ये भारत देश जो है इसके अंदर बहुत सारा पुअर लाइफ स्टॉक कीपर्स है। ये हमारे पुअर लाइफ स्टॉक कीपर्स है। आप देखिए गुजरात के हैं, इनका जो ऑर्नामेंट्स है, देखिए मर्द जो है वो कान में बाली 2 जगह पहनते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट हमने कोलवड़ा में किया था साहब, कि जो ये अस्थमा का एडेक्स जिसको आता है या बार बार जिनको लंग इन्फेक्शन होते हैं, उन लोगों को हम लोगों ने इस तरह ये जो कान की बाली है इस तरह पियर्स किए थे। पुरुषों में भी किया था और महिलाओं में भी किया था। और सभी का कहना ये हुआ कि ये करने के 15 दिन के बाद दे फील्ट वेरी वेल, उनको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट हुई है ऐसा महसूस हुआ। लेकिन साहब आप देखिए गले में भी इतना डाला हुआ है, पैर में भी इतना डाला हुआ है, ये सब एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर पॉइंट्स है। ये सब ये जो मछली हम लोग बोलते हैं उसने पहन रखी है। ये गले में महिला में भी पहना है, पुरुष ने भी पहना है। बच्चे, इतने छोटे बच्चे, ये शायद 3 साल से 5 साल की उम्र की बच्चियां हैं, उनमें भी आप देखिए कि दे आर हैवीली लोडेड विथ ऑर्नामेंट्स। तो ये इन्फेक्शंस, खास करके वायरल इन्फेक्शंस के सामने प्रतिबंधक है और ये प्रूवन है। तो हमारे पूर इंडियंस जो है वो ऑर्नामेंट्स का यूज करते हैं एक्यूप्रेशर के लिए। डिजीज कॉज जो है उसमें बैक्टीरियल वायरल जो साहब ने बताया वो पैरासिटिक, फंगल, रिकेट्सियल, क्लेमिडल, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोल। Pathogens can be transmitted to humans directly or indirectly from humans. Diseases that are transmitted directly to humans from animals through media, that is air, are known as direct zoonosis. साहब आज सुबह कैंसर पे हम लोगों ने काफी चर्चा की और उसमें काफी हम लोग चर्चा कर पाए। और मैं उसी के यहाँ पे बताऊंगी कि पोल्ट्री है, तो ऐसा बोला जाता है कि पोल्ट्री ऐसा व्यवसाय है कि जिसकी वजह से हमारी जो पोल्ट्री के साथ जिन लोगों का लगाव है, यानी जो उनका फार्मिंग करते हैं और जो उनको खाते हैं, सभी जो है वो इन्फेक्ट होते हैं। और ये बात जो है आचार्य ने भी सही बताई है। वायरल जूनोसिस के अंदर जीका, सार्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, हेटा वायरस, फिर चिकनगुनिया, इसके साथ हमें एक ध्यान में रखने का है वो HIV है, जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैंने HIV के केसेस को ट्रीट किए हैं, इससे तिल तिल मरते हैं ये लोग कि हमें ऐसा होता है कि ये मर जाए तो अच्छा है, लेकिन मौत आती नहीं है, मांगने पर भी मौत आती नहीं है, इतनी बुरी मौत वे मरते हैं। उनकी शुरुआत भी जो है वो जोनोसिस से ही हुई थी। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ह्यूमन टू ह्यूमन तो आप कर नहीं पा रहे हैं, पशु में क्यों जा रहे हैं? तो वहां से लाते हैं और ह्यूमन को देते हैं। तो ये जो पशुता है उसमें से बाहर आने की जरूरत है। देखिए सब वायरस कॉजिंग डिजीजेस, और यहाँ पे आप देखिए पैथोजन सोर्स, वाइल्ड लाइफ सोर्स। वाइल्ड लाइफ में हमको क्यों जाना है? होस्ट रिजर्वोयर। तो वाइल्ड लाइफ जो है उसके उससे जो है वो सीधा हमारे सिटी में, अर्बन एरिया में नहीं आता है, क्योंकि अर्बन वाले वाइल्ड में नहीं जाएंगे, वाइल्ड वाले अर्बन में नहीं आएंगे। एक ही प्राणी है जो दोनों जगह जाता है और उसी प्राणी को समझने की जरूरत है। हाँ, हम होमोसेपिया है ना, प्राणी है। तो ये जो है साहब ये पैरासिटिक है। तो आप देख रहे हैं कि पेट्स जो हमने पाल रखे हैं ये हमारे घर में आते जाते हैं, उनसे ये हमारे
शरीर में आते हैं, और जो खुले पैर हम घूमते हैं तो उससे भी आते हैं। तो पादत्राण धारण करने का तो हमारा आचार्य ने भी बताया है कि पादत्राण पहने बिना घर से बाहर निकलना नहीं है। सो यू नीड टू प्रोटेक्ट योर लेग्स अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। और डांग जो है वो कड़ा लगा हुआ डांग जो है उसको साथ में रखना है। डांग जो है वो बड़ी कड़ी, बहुत मोटी लकड़ी होती है, और वो काफी स्ट्रांग होती है, मोटी भी होती है, स्ट्रांग भी होती है। ऊपर से उसको तेल पिलाते हैं, जिस तरह हम अपने बदन का अभ्यंग करते हैं उस तरह डांग का भी अभ्यंग होता है। तो लकड़ी जो है वो इतनी मजबूत हो जाती है, और कड़ा जो है वो जैसे ही आप रख के चलोगे तो उससे आवाज होती है। तो जो सरीसृप है वो बिच्छी जो है वो सब जो है उसका आवाज सुनते ही, उसका ठपका सुनते ही वे भाग जाएंगे। तो ये एक हमारी अपने को बचाने का एक पॉजिटिव तरीका था। फिर ये आप देखिए सब कि इसमें कॉमन फंगल पैथोजेंस है, मेजर साइट्स ऑफ इन्फेक्शंस है, और एग्जिस्टिंग चैलेंजेस है। तीनों को साथ में लिए हैं। फंगल इन्फेक्शंस की बात जब हम करते हैं तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि डेनमार्क के अंदर इन लोगों ने फंगस की बैंक बनाई है। वो बैंक के अंदर 5000 प्लस स्पीसीज है, और हर रोज जो है 3 से 4 नई स्पीसीज उसमें ऐड होती रहती है। 5000 प्लस स्पीसीज ऑफ फंगाई की एक बैंक है। और उनका मानना ये है कि फंगाई जो है वो तो सबसे पहला प्राणी, जीवित जो अर्थ हैबिटेंट है वो फंगस है। तो हम बाद में आए हैं। फंगस का पहला हक बनता है इस पृथ्वी पे, और हम उनको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। तो होस्ट ससेप्टेबिलिटी टू फंगल इन्फेक्शंस जो है उसके अंदर जेनेटिक भी है, एंसेस्ट्री भी है, नॉन जेनेटिक भी है, एज रिलेटेड भी है, प्रैक्टिस्ड भी है। एंटी फंगल थेरापी करके हम इन्वेजिव फंगल इन्फेक्शन है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और प्रिवेंटिव एंड पर्सनलाइज्ड मेडिसिन ये लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, तो वही तो हम करते हैं। जो पूतना ग्रह के अंदर धूपन बताए हैं वे सभी धूप जो है एंटी फंगल है। एक्वाटिक जितने भी इन्फेक्शंस है उन सबको दूर करने के लिए अंधपूतना, शीतपूतना जो है उनके जो धूप द्रव्य है उनका धूपन करने से उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। हम लोगों ये एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं अखंडानंद के अंदर। सर्वांग अभ्यंग जो है वो सबसे बड़ा एंटी फंगल एंटीडोट है, एंटी फंगल है वो बल रक्षण के लिए। यानी कि जन्म से सहज बल, युक्तिकृत बल। तो युक्तिकृत बल के अंदर जो है हम लोग सर्वांग अभ्यंग का यूज कर सकते हैं। सुवर्ण प्राशन, मेद्य द्रव्य का सेवन, बल्य द्रव्य का सेवन, जीवनीय द्रव्य का सेवन, और रसायन द्रव्य का नित्य सेवन करने से हम अपने बल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये हमारे हिंदू मर्द को मैंने रखा है। देखिए सब, उसने कितने ऑर्नामेंट्स पहन रखे, कान में बाली भी पहन रखी है, टीका भी लगाया है, शिरस्त्राण भी पहने हैं। उसके कपड़े आप देखिए सीजनल है, उसके ऑक्यूपेशन के मुताबिक है। तो हमारे यहाँ पे ऑक्यूपेशन के मुताबिक ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, उसका पियर्सिंग भी करवाते थे, कान में हो, नाक में हो, फिर ये चिबुक में भी करते हैं, आंख में भी करते हैं, यानी आईब्रोज पे। तो ये जो है वो पियर्सिंग जो है वो बहुत बढ़िया तरीका था हमारा अपने आप को सुरक्षित रखने का। और शिरस्त्राण पहनने से हमारे दिमाग में ये बात बैठेगी कि शिर उत्तम अंग है और उसकी रक्षा करनी बहुत जरूरी है। और शिरस्त्राण पहनने से वाकई में हमारा शिर जो है उसका प्रोटेक्शन होता है। मैंने बीच में ट्राई किया था जब मैं फ्री थी तब, शेर सर पे जो है कपड़ा बांधती थी, और उसकी वजह से सब पूरी सीजन यानी पूरा विंटर और वसंत काल में मेरा गला जो है वो बिगड़ा नहीं। मेरा एक मीडिया पर्सन फ्रेंड है, वो हर बार बोलता है तुषार भैया कि मैडम आप कभी भी हाँ हाँ करके बात नहीं करती है, और मेरे को कभी भी बोलना होता है तो मेरी शुरुआत ही से होती है, और बीच बीच में मुझे पानी भी पीना पड़ता है।
उसकी वजह से मेरे श्रोता वर्ग मुझे बोलते हैं तुषार भैया आप कुछ कंठिल ऐसा कुछ ले लो जिसकी वजह से बीच में हमारा जो है वो ध्यान भग्न न हो। तो ये शिरस त्राण जो है इतनी इफेक्टिव हमारी पद्धति है। देखिए सर, विषज शोध जो मैं बोल रही थी, सुबह में हमारे करीब 4 घंटे चर्चा चली। तो विषज शोध जो है उसके अंदर विषज यानी अष्टांग हृदय में लिखा गया है ये विषज सविष प्राणी परिसर्पण मूत्रणात् दंष्ट्रा दंत नखाघातात विष प्राणी नाम अपनी अविष प्राणी को भी वो विष जुष्ट कर लेता है। विड़ मूत्र शुक्र उपहत मलवस वस्त्र संकरात, ये जो उनके मल मूत्र शुक्र से उपहुत मलिन हुए हमारे जो वस्त्र है उसकी वजह से भी हमको जो है विष लगता है। फिर वृक्ष आता है, तो विष वृक्ष अनिल स्पर्शात, जो विश्व वृक्ष है वहां से जो अनिल यानी वायु जो है वो आया और हमारे शरीर को स्पर्श किया तो उससे भी विषज शोथ उत्पन्न होता है, यानी इफेक्ट हमारे बदन को होती है। स्पर्शात कर योग अवचूर्णनात्, तो ये गर योग किसी भी गर विषय योग है उसका अवचूर्णन हो जाता है। तो महर्षि चाणक्य ने अपनी नीति शतक में बताया है कि दुश्मन जो है वो किस तरह हम पे हमला कर सकता है। तो घर द्रव्य जो है वो जमीन पे डालता है। घर योग का अवचूर्णन यानी पवन की दिशा में घर योग का डालना, तो सैन्य जो है वो घर से जुष्ट हो जाएगा और युद्ध नहीं कर पाएगा। हम शायद उसी युग में पुनः जीना शुरू कर दिया है। तो शोथ जब होता है, क्रॉनिसिटी में जाता है, तो उससे ग्रंथि का निर्माण होता है। और ये माधव का रेफरेंस में दे रही हूँ। तो ग्रंथि जीर्ण होती है तो अर्बुद अवस्था में जाती है, और अर्बुद अवस्था जब जीर्ण हो जाती है तो द्विअर्बुद या अध्यर्बुद में जाता है। और जब ये परिस्थिति उत्पन्न होती है तो फिर वो घातक अर्बुद में भी जा सकता है। तो विषज शोथ उत्पन्न ही न हो उसका हम ध्यान रखें। सब ये मरीन लाइफ जीने वाले लोग हैं। मैंने महाराष्ट्र से लिया, हमारे मुंबई में मैं खुद जो है वो मरीन इसमें जी हूँ। हमारा जो सब्जी है वो उसके बाजू में ही मटन भी बिकता था और मच्छी भी बिकती थी, और हमने कभी इसको कुदृष्टि से नहीं देखा है। हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। वे लोग ये खाते, हम वो नहीं खाते हैं, बस वहां बात खत्म हो गई। लेकिन ये जो कपल है, आप देखिए उनकी नथनी जो है उसकी मुंह पे बार बार लगती रहेगी। जितनी बार ये महिला बोलेगी उतनी बार जो है ये नथनी उसको लगेगी। और उसने कान भी इतने पियर्स कर रखे हैं और सर पे ये बांध रखा है। ये महिला इस वक्त ऑक्यूपेशन पे है इसलिए उसने कुछ पहना नहीं है, लेकिन जब वो घर जाएगी तो ये सब पहनेगी। तो ये उनका पहनावा है, और ये पहनावा जो है वो ऑक्यूपेशनल पहनावा है। वे 8 वारी ही पहनेंगे, हमारे गुजराती तरह का नहीं पहनेंगे। तो वो जरूरी है। मर्द भी जो है उसी तरह, मछुआरा जो है उसी तरह का वस्त्र परिधान करता है। और वो इसलिए है कि वहां से वो जब घर आएगा तो उसको मिनिमम जो है वो अफेक्शन होगा, तुरंत ही वो धो डालेगा। कपड़े जो है वो मिनिमम दूषित होंगे और वो घर पे इन्फेक्शन मिनिमम लाएगा। गौ माता जो है वो हमारी रक्षिका है। मैंने गिर गाय अपने बच्चे के साथ रखी है। आप देखिए माँ और बच्चे दोनों का कलर एक ही है। यहाँ पे इमर्जिंग जूनोटिक डिजीज और लाइव एनिमल मार्कर्स, वाइल्ड लाइफ हंटिंग, ये सब जो है इन सबको हम, हाँ ये सब हमारे को रोगग्रस्त करते हैं। लेकिन रोग कब होते हैं? जब हम प्रोन है, उनको प्रोन है तभी ये व्याधि हो सकते हैं। अगर हम प्रोन नहीं, अब हम बलवान हैं तो इनके साथ हम आराम से रह सकते हैं, अपनी और उनकी लाइफ दोनों में मेल कर सकते हैं। सब, हाँ, जोशी फैमिली एंड कोबरा फैमिली lived in the same campus for 50 years। फिर यहाँ बस्ती बहुत बढ़ गई तो कोबरा फैमिली चला गया। लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ पे स्नेल्स इतने सारे हैं
तो हम लोग उसको सुइसाइड स्क्वाड बोलते हैं, तो हम उसको लेके साइड में रख देते हैं, तो क्या उससे हमको जूनोटिक डिजीज हुआ? नहीं, नहीं हुआ। वे भी जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं। चारों ओर इतनी हरियाली है तो उसके ऊपर पक्षी भी इतने आते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि जो कैट्स हमारे घर में रहती थी, यानी वरांडा में रहती थी, हम घर के अंदर नहीं आने दिए उनको, तो एक बार प्रांजल को घर में आने में देर लग गई। मैं बाहर जो हिचका हम लोग बोलते हैं उसके ऊपर बैठी थी, और मैं सोच रही थी इतनी देर क्यों गई, रात के 1:30 बज चुके थे और बच्चा लौटा नहीं था। तो मेरी जो कैट है वो हमारी कार के ऊपर आके बैठ गई और मेरे सामने ऐसे देख रही है। फिर वो हमारा जो गेट है उसकी ओर देख रही है, फिर से मेरी ओर देख रही है। मेरे समझ में आया ये कुछ बोलना चाह रही। शी वॉज नॉट ए डोमेस्टिकेटेड कैट, शी वॉज ए वाइल्ड कैट। वो मेरी ओर देख रही है और फिर अपना हाथ चाटने लगी, अपना पैर जो है चाटने लगी, और मेरी ओर देख के ऐसी आलस उसने बनाई बोलने के लिए कि डोंट वरी, ही इज जस्ट कमिंग। और 2 मिनट में प्रांजल गेट पे था। देखिए सर, ये लोग बातें करते हैं, बहुत अच्छा कम्युनिकेट करते हैं, दे टेक केयर। मैं एक जगह मुझे जाना था और कार टैक्सी मुझे लेने के लिए आने वाली थी। मेरा बड़ा बेटा मुझे छोड़ने के लिए आया था वहां तक। तो कौवा जो है बहुत जोर से काऊ काऊ कर रहा था। तो बाबा बोला, हाँ जा रहे हैं जा रहे हैं, हम तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। तुरंत कौवा ने काऊ काऊ करना बंद कर दिया। को ऐसा कहा जाता है कि कौवा जो है वायरल इन्फेक्शन लाता है, इसलिए कौवे के साथ आप कुछ भी मत करिए। अब भादरवा महीना आज से नवरात्र शुरू हुआ हमारे, आषाढ़ी मास की नवरात्रि आज पहला दिन है। आषाढ़ के बाद श्रावण, सावन के बाद भादो आएगा। तो भादो में हम लोग कागवास डालते हैं, बोलते हैं हमारे पितृ काग में वास करते हैं। और कागवास तब तक ही कौवा लेने आता है जब तक कि हमारे पितृ हमसे जुड़े हैं। जैसे ही पितृ का डिटैचमेंट हो जाता है वे नहीं आते हैं। तो ये कुदरत के नियम है। उन नियमों का उल्लंघन जो भी करेगा वो बीच में बैठा है, इस तरह रहेगा। तो प्रकृति के साथ तालमेल करना ये आयुर्वेद ने सिखाया है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं अथ भूत दयाम प्रति। तो ये आयुर्वेद तंत्र जो है जीव मात्र के लिए अनुकंपा से प्रेरित होके रचा गया है। ये आदेश है, उसका पालन करना हमारी फर्ज है। वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे राष्ट्र की भावना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जयतु आयुर्वेदम, जयतु भारतम। नमस्कार सर। जय हो, जय हो। Thank you very much, madam. Very nice style you have communicated everything. Excellent. Agrinotri sir. Now session is open. बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम वैद्य अरुण जोशी जी। बहुत ही गहराई से आपका हर प्रेजेंटेशन मूल्यांकन की सीमा के ऊपर होता है, इसलिए उस पर कुछ भी रिमार्क कर पाने की हैसियत नहीं किसी के है। सच्चाई ये है कि हमने न केवल पशु पक्षियों से जोड़ा, हमने प्रकृति से जोड़ा, और उसी का परिणाम ये है कि एक सर्कल बन गया। जैसे हम लोग कहते हैं एक हमारा वाटर साइकिल है, एक हमारा एयर साइकिल है, ऐसे हमारा जीवन चक्र है। उस जीवन चक्र में जितने क्रीचर्स आते हैं, निश्चित रूप से वो सब हमारे जीवन को रास्ता देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपने प्रेजेंटेशन दिया बहुत ही अच्छे से। और जो चीजें आपने बताई, आज से गुप्त नवरात्रि भी शुरू हुई हैं। 2 प्रच्छन्न 2 गुप्त होती हैं, और निश्चित रूप से जो साधक है, विशेष रूप से तंत्र साधक, वो इसको भी निभाते हैं। और कुल मिला के हमारी जो विरासत है वो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, और उसको जिस रूप में लिया जाए उतना अच्छा है। तो ये सब भाव भी आपके प्रेजेंटेशन में ऑटोमेटिकली हमेशा ही देखने को मिलते हैं। ये भावनादायक और बहुत ही उत्साहवर्धक आपका प्रेजेंटेशन रहता है। आपका बहुत बहुत आभार है। जैसे कि प्रोफेसर पवन शर्मा जी से निर्देश मिले हैं, अब सेशन ओपन है। आज के इस विषय पर जो अपनी चर्चा करें, वैसे तो जूनोसिस डे है, लेकिन उसको जिस एंगल से हम लोगों ने मोड़ा है कि ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन के क्रम में हम कैसे अपने को वैक्सीनाइज करें या इम्यूनाइज करें, इन्हीं सब जून्स के बीच में रहते हुए, जैसे पुरानी कहावत थी कि हाउ योर स्मोकिंग इंजूरियस टू माई हेल्थ, ऐसे ही हाउ द अदर वर्ल्ड टीचर्स आर
supportive to us and favorable to us. And also, apart from the kettles which are giving milk, the other kettles also which give our enjoyment, recreative manner and supportive, all loving attitude. So we should also make a point. But still, even the rabbit, this mice or most our this rats, they are carrying so many sources of these wounds which can be responsible to spread the certain diseases. So for that angle, we should be careful. And we are knowing that hazardous effect of plague due to this mice, rats, there in Surat, way back 10 years back, I think. Sir, And also in the after the first World War. So any our spectators and our participants, those who are here to add on something, most welcome. Dr. Geeta ji is here. Dr. Sushmita ji is also here. Savitri madam is also here. She is interested. She is from Karnataka. She was interested to have our webinar link on daily basis. So I requested that you please give me the number, and we have communicated. So goes the case with the e-certificate. Some persons put the point that how they will get an e-certificate. The link is there in our chat box, so they can take from there. Thank you so much. And I also appreciate Dr. Professor Sumoy Roy's first presentation on this Zoonoses Day with a great, deep, knowledge-oriented work. Informed a lot us, and we got a very, very new information. Our rest of the spectators and listeners of our previous webinar based on gynae and Nirvavastha Samanya Samasyaएं, they can also participate and make any comment or may put any type of query, question. Archana Sharda is also here. Pooja Yadav is यदि here. नहीं होगा, जो भी रेज एंड कर दे, यदि नहीं होगा तो हम लोग कंक्लूड करेंगे. हाँ, हम कंक्लूड करेंगे क्योंकि हम लोग 8वें से जमे आप हुए हाथ हैं. रेज कर देंगे तो बेटर होगा. हाँ, कि हम And लोगों 5 ने minutes we will conclude. 8वीं से बैठे हैं और इसीलिए कि अब आपके क्वेश्चन आए तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, वो आपको और गाइडलाइंस दे सकेंगे. I think if you put question on any of the topic of webinar, because Madam Parul Joshi is equally expert on gynae also, so no hesitation. Previous guest speakers, experts are here or not, but because we have got 10 minutes to conclude, we can invite your suggestions, question whatsoever. Otherwise, we would like to close at the earliest. Any query from our participant side? I think it is no, because they are all got a very heavy, good dose of so many informations. They themselves suffices the purpose of our webinar of both the topics. So again, we thank a lot to our guest speakers and also all those speakers, all those spectators and listeners who raised the sound high number 97 or so. So thank you so much, and we Tomorrow is our webinar on Grahani from 3 p.m. 3 p.m. Because today is Sunday, tomorrow is Sunday. Yeah. So in noon we can complete it. Tomorrow Kai Chikitsa series, Grahani Chikitsa. Thank you all for joining today. Please do join every day, because we are conducting webinar on each and every topic which can be related or which may be related with our Ayush. Thank you very much. Good night. Put your question, this mobile number, WhatsApp number. सुष्मिता जी, आप हमारे मेल पे हमने चैट बॉक्स में मेल का आईडी डाला है, आप उसमें अपना फोन नंबर डाल दीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, क्योंकि चैट बॉक्स तो अभी खत्म हो जाएगा. व्हाट्सएप वाला. हाँ, चैट बॉक्स तो अभी खत्म हो जाएगा. जी, मैं थैंक